Hi students, welcome to the new session, and that session is also based on the HTML tables. In our last session, we discussed about the tables. I gave introduction about the table, and table is made up of some rows and columns. I already told you that. I already gave you the note about the structure of the table. Now we will focus on how to create a table. Creating a HTML table. HTML table. Creating a HTML table. In your last session, I gave a note about the structure of the table. In this session, we will discuss how to create a HTML table. To create a HTML table, we need a tag. That tag is table tag. The table tag is used to create a HTML table. Table is the opening tag, and slash table is the closing tag. Clear? The table tag is used to create a HTML table. That format is like this. Students, look at here. Okay, this is the body, and under that body we use this table tag, and under table tag we write some other kind of tags. We will discuss further, and we will close this table using the slash table tag. Table is the opening tag and slash table is the closing tag. Then there is, we will close the body, then slash HTML. This kind of codes you can see at the time of creating a table. The particular focused on this table and slash table tag. Within that, this tag allows us to create a tag, create a HTML table. So we must include some other kinds of tags like td, th, tr, some kind of tags within that table and slash table tag. So basically, this table and slash table tag allows us to create a HTML table. Next part is row. To create a row inside a HTML table. For creating a row inside a HTML table, we need a tag. That tag is known as the tr tag. Heading is creating rows. Okay. To create rows in a HTML table, tr tag is used. So generally tr tag is used to create a rows or to create some rows inside the HTML table. So tr is opening tag and slash tr is closing tag. Okay.
So basically inside the table we create some rows. For example, these rows are created. To create this type of rows, we need a tag. That tag is the tr tag. The tr tag is used to create a row. So I give you an example here. This is the HTML. Under that, create the body, and within body, I use here table to create the table. After that, we use the tr, and within tr, some other kind of tags are used. Then we close this tr tag. Then close the table tag and close the body, and last one is slash body slash HTML. Okay. Here look at table tag is used to create the table. I mean table create kale. Within that table we must include the rows. Then to include the rows, to insert the rows or to create the rows, we use this kind of tags, the tr and slash tag. Slash tr. Tr tag is opening the tag and slash tr is closing the tag. So basically, you know that table tag is used to create the table, and under the within that table tag, table and slash table, we must use the tr and slash tr tag. Next part is how to insert the data into the table. Students, already you knew that data should be written or data should be stored inside the cell of the table. आमे तो एठू जानिले जे how to create the rows, but to insert the data into the row, into the tables, we must need a cell, and you already knew that cell is the intersection of rows and columns. So here our basically our intention is how to store the data, how to store basically or insert the data, how to store the data in a table, how to store the data inside a HTML table. For this purpose, td tag is used to show or to store or insert तब कर दिया. So store और insert लिखते insert data, to insert data inside inside a cell, inside a cell. Okay. td tag is used to show or to insert data inside a cell. Cell is the intersection of row and column. Already जानी तुम्हें ए बाबद रे. ताले एटी basically आमे previous time में कौन पढ़िले ना tr tag is used to create a row, and a row is not sufficient to create a table. To create a table, another kind of areas, another kind of some part of the table we need, that is the column, and using rows and columns we can create or intersection of row and column gives a particular area, that single or small or little area is known as the cell, and inside the cell we are going to insert some data. We are use that type of cells to store the data inside the table. Clear? The td tag is used to show or to insert data inside a cell, and td is the opening tag. Somebody are pairing here is opening tag, and the slash td you use for closing purpose is closing tag. Closing tag. Now, what example is this is the HTML. Under this body, right here body, then we are going to create a table using the table tag, and after that our intention is to create a row, and within that row
ओके एठी आउटे छाड़िली मु तुमको एठी गोटे हेडिंग दबा मु हेडिंग एठी दे दूची द th tag is used to create a heading, okay, or td tag is used to give the to insert the data. td under this td tag I am lekhuchi mu ethi Ashutosh. Then you write here /td like this /td, then you close the tr. by या भीतर आउ किसी डाटा रखियो आशुतोष td एज आम दे परिया केते 15/td मु यार डिटेल्स गोटे कोड लिखिबी या पर देन आम ये क्लोज कर परिया /tr गोटे रो तैयारी कली जो रो दीटा वैल्यू को स्टोर कर गोटे आशुतोष आ गोटे 15 को देन /tr दबा देन /table and /body and /html. Clear? So in this way we can insert some data into the table. आ गोटे पार्ट एठी छाड़िली तो देखिबा that the heading, how to create a heading of a HTML table. गोटे टेबल रो हेडिंग किमिति क्रिएट करिया. How to create heading in HTML table. How to create heading in HTML table? For this purpose there is a tag, that this tag is th tag, table heading. S stands for heading, T stands for table, table heading. This tag is used to create heading in HTML table. The ts tag is used to create heading in HTML table, and similarly th here is opening tag and /th is closing tag. Look at this example. It starts from this HTML tag, then body, then we are going to create a table using the table tag. Within the table, our intention is to create the first row, and first row is the heading. Then for this purpose we use the tr tag, and under this tr tag I give the ts, and the ts tag is used to create the heading. My first heading, for example, is the roll number, and you use your /ts to close this tag, to close this line. Then next heading ts, I give name here, then /ts, then ts age. फास्ट टेबल को मन पकाओ मो रोल नंबर नेम एज देइथिली सेटा हेडिंग रथिला मो सहित पे सब th टैग भीतर ही उडे लिखुछ. देन आफ्टर दैट आई विल क्लोज द रो, मो से रो को एंड करूछ. देन आई विल क्लोज /tl, आई क्लोज द टेबल /table. दिस टैग indicates the closing of the table. Then /body, and after that /html. These four types of elements must be needed to create a table. That element is how to create a table, that a table tag. One is the table tag. Second is how to create the row, that is the tr tag.
Then third is how to create the heading, that is the th tag, and last one is the td tag, which is used to insert the data. Basically these 4 elements or 4 types of tags are must be needed to create a HTML tag. And after that some attributes of HTML tables विषय आम आलोचना करिया. सेल्स पैडिंग, सेल्स स्पेसिंग, दिस टाइप ऑफ एट्रिब्यूट्स बॉर्डर आम किपरि क्रिएट करिया ताकू करि परिया. बर्तमान मु तुम गोटे प्रोग्राम लिखुची डिटेल्स जे आम गोटे टेबुल गोटे क्रिएट करिबा. से टेबुल भितरे आम किपरि विभिन्न डाटा को रखिबा गोटे HTML कोड मु लिखुची. जते बर्तमान पढ़ी आसले डिफरेंट टाइप ऑफ टैग्स, से टैग्स को यूज करिके हाउ टू क्रिएट ये टेबल आम गोटे जीवा. Students, look at the table here. I give your first name, FIRST, first name. This is the last name. And this is the age. I insert some values here. First name is the Ashutosh. Last name is the Mohanty. Age is 17. Second part is Devasis. Last name is the Panda. Age is the 20. And last name is Sasmita. This is the Mahapatra. Last name is Mahapatra. And age is, for example, 22. I will draw this kind of table which will be shown on the web page. आम जो वेब पेज रे टाइप गोटे टेबुल देखा, एंड दैट टेबुल मुझे क्रिएट करुँचे. टेबुल इज क्रिएटेड यूजिंग ए पर्टिकुलर कोड्स, सोर्स कोड्स. से सोर्स कोड को बर्तमान लिखुची HTML कोड. क्लियर स्टूडेंट? जस्ट देख, देयर इज नो बॉर्डर, किसी बॉर्डर ना टेबुल भितर कौन बॉर्डर ना, किंतु तुम यहाँ कहीपर दिस इज वन कलम, यहाँ हूँ यू गोटे कलम, यहाँ हूँ अनादर कलम, ये गोटे रो, एठी गोटे रो, 4टा रो एठी अछि, किंतु इट इज नॉट विजिबल. या परे ता नेक्स्ट सेशन को आसबि हाउ टू गिव ए बॉर्डर ऑन ए टेबल विषय मुझे पढ़ेबी. बेसिकली यहाँ गोटे टेबुल फॉर्मेट अच्छी ना नहीं, टेबुल फॉर्मेट अच्छी, किंतु यहाँ हूँ आम आउ थे देखे दूचे. यहाँ हूँ फास्ट कलम, ये हूँ सेकेंड कलम, ये है थर्ड कलम, ये गोटे रो, एठी गोटे रो 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर रो, दिस द 4 नंबर रो. यही टेबुलटा को मु क्रिएट कर. तो जीवा फर्स्ट इज द डॉक टाइप. ओके, HTML, this the doc type, HTML doc type. बा इटा तुम लिखिले हम ना नहीं, आम डायरेक्ट HTML में जाऊँ. HTML देन आम दबा ये हेड. अंडर दिस हेड यू विल गिव द टाइटल my first HTML table आम लिख पारिया. HTML table, this is the title. Title must be closed by the slash title. Clear? After that you have to close the head by using the slash head tag. This is the header section of the table. Okay, next part is body. You start the body section using the body tag, and after that you will use here the tag. The tag is the table tag. There is no attributes, no extra attributes are used to create the table. Simple गोटे table तैयार करछि. या परे आसले हमें ताको attributes विषय पढ़ेबा. The table, and under this table I will create the first row. In first row तो कोटा अछि first name, last name, age. So I give the tr tag here to create the first row. Under this tr tag I will
create some headings like first name, last name and age. That's why for heading purpose the th tag is used. Under th tag first is the first name, FIRST first name. जो पिला जदि न देखा हो मु प्रत्येक वर्ड को प्रोनाउंस करछि से गुडी को सुनी के लिखियो th, then you give slash th here, slash th. Next is last name, th, last name, then you give here the slash th, and last one is age. ये another kind of heading, th out heading रहिला th, this the age, next part is slash th. Clear? Then you have to close this row. The first row I close कर देले, first row create कर देले. Using tr you create the first row, and under this first row you have to write the first name, last name and heading. This is the heading of the tag. The first row, first name, last name and age. For this purpose I create a heading using the th tag, table heading th, table heading tr, t for table, r for row. ये table row एटा मन रखियो tr row create करिया पई tr यूज करछनी, ए heading पई th, h for heading. तो th using the t within that th and slash th I give the first name, and this is the last name. Within also it is also written within the th and slash th, and age is the heading which is written another pair of th and slash th pair. Clear? यही पार्ट को आम क्लीयर करदे ये लिखिदे मैं फास्ट नेम, लास्ट नेम, एज. क्लीयर बर्तमान पर्यंत. नेक्स्ट पार्ट को जीवा ये लिखुची मु एटा गोटे गला ये स्टार्ट है. आमर एबे इंटेंशन कौन आशुतोष महांती एवं 17 को एंटर करवा से आउ गोटे रो क्रिएट करवा. दैट्स व्हाई आई यूज द tr अगेन. tr you already know that using the tr we can create a row, and within that row we have to insert some values, that is the table data, td, table, d for data. किंतु या पाई कौन दोथले हेडिंग, एटा होची डाटा, ये हला हेडिंग, एटा को डाटा कहबानी, एटा होची हेडिंग, ये हला डाटा फॉर td. And now I write Ashutosh. Ashutosh is the first name, it is the value of a first name. ताला मैं जले एबे क्लोज कर दवा ताको slash td. Then last name, further you write the td, and within that you write the last name, and here you close this td. This is the it starts, this is the opening tag, it is the closing tag, and you give the age. For this purpose I give 17 is the value, okay, slash td. Now you close the tr. Clear? Then एटा होजे फास्ट लिखिबो, दिस इज फास्ट, एटा होजे सेकंड लिखा हला. तम सिक्वेंशियली तळु तळु एभा लिखिबो, एट जागा न दिवार मु लिखि दोचे एभा. देन आमे एठी की जिबा 3 रे लिखिबा कोन. तमे 1 2 3 दबनी, तमे सिक्वेंशियली लिखि जिवो, त मु जानिया पई दोचे. देन 3 रे आमे लिखिले कोन आ गुटे रो तयार करबा देवाशिष पंडा और 20 पई. तो से आम पुणी गोटे रो तैयार करिया tr. अंडर दिस tr आम कौन देले td, td भीतर आम कले देवाशिष एको क्लोज करवा स्लैश td देगी. देन td पंडा एको क्लोज कले स्लैश td. देन td केते एज रखछंती 20 स्लैश td. एबे रो क्लोज कर दवा, ये रो क्लोज है स्लैश tr दे. नेक्स्ट आउ गोटे रो क्रिएट करबा एबे लास्ट रो से पुणी फर्दर आम कौन दबा से भली tr, ए tr अंडर देले td. ओके, सस्मिता, देन स्लैश
TD, after that TD, महापात्र न देखा जब मो जहाँ कहूँ शुणुव स्लाश TD एंड एज के 22 आउ गोटे TD देले 22 एबे क्लोज करदे स्लाश TD। एबे आम कौन कले सबू रो क्रिएट करदे डाटा भी देदेले। बर्तमान आमर काम कौन है यही रो को क्लोज करार अच्छे स्लाश TR। बर्तमान सब जो टेबुल क्रिएट कंप्लीट है नहीं एबे कौन करवा आम टेबुल को क्लोज करवा। एटा 3 रे लिखी एबे ये लिखिदे ये लिखिदे यहाँ 3 रे गला ये 4 पार्ट लिखिदे छुआ कन्फ्यूज हेनी लाइन बाय लाइन लिख। हाँ बर्तमान कौन है आम क्लोज करदे TR क्लोज कले एबे आम टेबुल को क्लोज करवा। टेबुल क्लोज करने स्लाश टेबुल देन आम क्लोज कले बॉडी के स्लाश बॉडी क्लोज करिया स्लाश HTML। ओके दिस इज द कोड टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ टेबल्स। ओके दिस इज द you here you look at this is the heading first name last name and age and these are the data of the table। then first आम कौन लिखा HTML then head title within title आम दबा title my first HTML table then slash title is the closing tag then you close the head section slash head then after that you start the body tag then table then TR within the TR आम हेडिंग देले TH फास्ट नेम स्लाश TH ये टाइप हेडिंग सब क्लियर है। एबे आम फास्ट रो को कंप्लीट करदे फिनिश कले नेक्स्ट सेकेंड रो को स्टार्ट कर आम थर्ड रो एंड फोर्थ रो को रखी लास्ट को ये 4 रे मुझे लिखी तुमको नोट कला इजी हम ये 1 को लक्ष्य कर पूरा ये लिख देन 2 रे एट को लिख तलू लिख 3 रे यहाँ पूरा लिख तार 4 रे 8 लिख जेहेतु आम इनसफिसीएंट स्पेस अच्छी से गोटे कोड को मु पूरा ब्लैक बोर्ड लिखापी ये टाइप सिक्वेंशियल नंबर सब दे देती किंतु तुम्हें ये नंबर दब ना तुम्हें पूरा तलू 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 कोड गुड़िक लिखिदेव। दिस इज द कोड टू क्रिएट ए HTML टेबुल। ओके देयर इज लुक एट देयर इज नो बॉर्डर। नेक्स्ट क्लास को आसिले मैं देखी ये बॉर्डर केमी क्रिएट कराबो बैकग्राउंड कलर केमी चेंज कराबो तापर दीटा सेल को केमी आम मर्ज कर। हाँ ये सब कि तल रो साइड रे दीटा स्पेस अच्छी यहाँ दुईटा सेल अच्छी। ओके ताको मु गोटे सेल करने चाहूँगी ताको मर्ज करिया से गोटे मेकानिज्म अच्छी कि तलू तलू को दीटा सेल अच्छी। ओके ताको मु मर्ज करके गोटे सेल करी एगुड़ी विषय में नेक्स्ट क्लास को डिस्कसन करिबा। फॉर टुडे सेशन इट्स ऑल ओवर। थैंक यू।